Hi, good evening. So we will Good wait evening, for sir. another 1 minute. Hi Good, sir, good evening sir. good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Hope you are able to see my screen now. I am sharing. So today's topic is basic SQL queries, and I have asked you to install Postgres SQL Server and PG admin application. So hopefully everyone have successfully installed both of the application. Maybe they have not connected or they may not they find some difficulty to connect. So I'm starting from that point of in the servers we are having option to create a new server. Typically when we are installing server and the client is the tool which enable you to access the database server. Here you can put any name. Typically we can put localhost or some name, and in the connection string we can put localhost or the IP of the your machine, or 127.0.0.1 is the localhost default IP. Typically default port for the Postgres SQL server is 5432, and you can set password as per your choice. You can leave the password also. In that case your Windows authentication mode will be enabled. That is known as the peer connection. And if you have set the password during the installation process, then you have to provide your password whatever you have set here. For me, I have already added the localhost database here, you can see, and I have created few of the databases. What the table we will create in this session, this that is also I have put on some website, on our website, basically course website. And we will continue with these tables, these 4 5 tables throughout the course. We will put the data inside it, and we will prepare user interface on it, and we will learn JDBC connection, Hibernate, JPA, all together on this particular set of tables only. So on the course website I have created one project work menu, and this is the objective of this session also, and for the few of the upcoming sessions also. Objective is like this: we have asked to create a module that will take care of following activities: audit trails and client onboarding management. So basically we will not going to create a very big meaningful application here, but we will create some of the application which cover most of the topic in day-to-day application development process. So first, before diving into the details, first I would like to say that what is the meaning of audit trails. Audit trails are the set of records which keep track of what the services or the method or the area of the application you have touched upon during the your activities. Suppose I have a shopping site, or I have any automation application where the task is gets automated, like booking management system or any application in which you are having some of the credentials, you are having access through the user ID and password, and based on the roles you will be able to access only the designated areas of the application. To keep track of the activities, what portion you have touched on particular session, and when you have logged in, when you have logged out, which modules, which forms you have accessed. So tracking all these processes in a particular table to get the idea how the user is interacting with the system, all this activity tracking is known as the audit trails. This is also very useful activity when we are talking about security, and we want to know how our system is being utilized by the customer or the users. Second topic we are taking into the consideration is client onboarding management system. So this is a small part of a big application. That application is doing a lot of other activities also. Along with that other activities, we are having one onboarding management module in which we are asking our client to provide some detail
like contact information, escalation matrix, and the and the point of sale, or you can say from which IP they will interact with our system. This is a kind of system to system integration. For that, I have created few of the tables, and gradually we will improve the table structure also during the course of our during the ongoing sessions. So what I have created so far is, for the client onboarding management system or the module, we will have the three tables. One is the client basic client table, then the client contact, because we will have more than one contact for a particular client information, and then client application setting. So the client application setting table will take care of our keys and IP addresses from where the client will access our system. And in the client contact table, we will have the escalation matrix, like name of the person, contact number, whether he is active, inactive, and what is the hierarchy of that contact. So you can see that earlier we have discussed in our last session that understanding the entity and identifying the meaningful attributes. Then after identifying the attributes, we need to take care of the data type, length, constraint, and some of the defaults which we can put in case of when there is no value provided by the user. So I have created one table name is the client, and typically we will okay, and there is a naming convention also. So in the Java programming, we are typically using camel notation, in which the words will be separated by making small character and capital character. Means first character will be the small, and on each subsequent word, first character will be the capital. But in the database, we are using underscore to separate two words, like client underscore ID. In Java, it will be the client ID, where I will be the capital character. So these are the basic coding standard or the table creation standards which follows in the industries. So client ID. So client ID will be in the type will be the character, and we have chosen the length maximum 20 character in a client ID table or column. This is the primary key. So we have put it primary key yes. Constraint, obvious, it is a primary key. Nullable, can it be blank? No. So this is a default constraint which will be implemented by the DBMS management system only. And then remark. So gradually we will put the remarks for each column. Then there is a client name, and few of the indicators we are keeping in our database, so that we can make some of the decision based on the scenarios, like is active, is related, operation date, when the last data of a particular row was modified. Similarly, we have client contact table. I'm not going into the detail. You all have this URL with you, and this URL is also available in the WhatsApp group description. From there you can go to this document, read the document carefully. If you found some of the suggestions, we can add some more column, or we need to change the data type or the length of the column. Please suggest, no problem in that. Here we have our database PG admin. So in the database, we can create the new database using the create again. Right click on the node databases, and I am going to create a new database, FSD 012023. This is our course name also. Saving it, it will create a new database, FSD 012023. Postgres have the concept of schemas. Most of the databases are having schema. Schema is the logical name of the collection of similar tables. Default schema is public.
So based on the, if it is a very big project and we have hundreds of table, then we can make multiple schema where we can store related tables all together in a particular schema. So on the public, we are having different components of the database like sequence, procedure, table, types, triggers, and views. We will cover all these topics one by one, especially procedure, sequence, table, and views. These four topics will be covered in this course. So on the table, we are having two type of table creation mode. One is the GUI mode, where you can right click on the table node in the tree, and when you click on the table you will get a full fancy window here. In the window you can provide the table name, where will be the, what will be the schema for your table, and in the column here is a plus button, and you can start adding your columns of that particular table. Then you have constraint, where you can add constraint like primary key, foreign key, check, and unique. All for these constraint we have already talked about, and we will talk again in this particular session also. The other way, this is a very user friendly way, I would say. There is a other way. You can right click on the database, and then you can click here query tool, and here you will get a text box typically known as the query editor. Here we are having commands for each and everything, like create table. Then the syntax is after the right these. Please focus on the color of the words also. So all the word in what is this, pink or dark pink, I think. Color is the keywords you cannot use in your user Purple. defined entities. Purple, yes. All the purple color words are the user system defined words or the reserved words. You cannot use in any user defined things like the name of the table, name of the function, name of the column, name of the constraint, etc. So I would prefer to create the table using the create table command, so that I have full picture in one go. Otherwise in the user in that window mode we have different tabs for different things. That is also useful sometime. But when we are asking to create many tables and professionally we are dealing with the database stuffs, then typically we are using command window only or this query editor only. So first table is our client table, and command is create. Then what is need to be created? Table is need to be created. Create table, table name. Then we will open the bracket and put the semicolon, and inside this bracket we will start providing column definitions. Like first column is client underscore id. Type of the column is varchar. We can provide, no, this is here we will use character varying. Varchar is the command for Oracle database. And if you are regularly using multiple databases system from different vendors, then you have to take care of these things. Okay, this is comes this character varying is in Postgres, and equal thing is in the Oracle is the varchar. So character varying length we have decided to put 20. There is two way to provide primary key information. One is at the column level and other is at the table level. So when we are having uh, column on one column, we need to provide client primary key. Then simply we can write here also primary key. But more professional way to add primary key is at table level, so that you can provide the constraint name also. So this is one way. I will keep in this table this way only, and I will refer the
Word file also to get the column name. Next column is the client name. Character varying. Character varying. Length will be 100. I think what I put there, no problem. 50. Length will be 50. And again I have to check this is no, this is not a primary key, but along with this is not nullable. Is nullable? No, means we cannot leave it blank. So we have to put constraint like this, not null. Next is what? Is active, is deleted, and op underscore date. So quickly I am putting all these things. Is active will be boolean. Default, I have provided some default, I think. Default is true. Again, not null, and default is true. Is deleted, boolean, not null, default, false. And the last column is op underscore date. op underscore date means operation date. This is timestamp without time zone. So again, this is our table structure and create table command. Create table, table name, list of the columns along with the data type, length, and sensible default. I have already told you that we can put the primary key as a separate. Please mute your mic. So we can add the primary key as a constraint also. Constraint name like client underscore pk or p key, something primary key. Then type of the constraint, primary key. Then in the bracket we can provide the column name here. So basically when we are putting the primary key constraint on the table label, it gives us the opportunity to provide more column names by comma separated. Who is unmute? Basically, please kindly mute yourself. So now it looks good to go. We have created a table, and inside table we are having around 5 columns. And in the what is this toolbar or some standard toolbar, we are having execute button. So when we are executing it, we are getting a message, create table, query returned successfully in particular 47 millisecond. And when we are refreshing our schema, like table, I think, okay, I got it. So one table has been created. Any doubt up to this point how to create a table in the database or in the PostgreSQL? You can use the create table command, and you have to provide the column name, data type, length, and some default. So we will put this create command in a separate notepad file for future reference, or whenever I need to create a new database, I can use this command once again to create similar table. Okay. And in the same manner, I can create rest of the table also. So I will create one more table only so that we can talk
more on different topic, otherwise the full length will be taken by this table creation only. Actually, in the second table I want to show you how to connect two columns of different tables with each other as a parent child relationship or as the referential integrity or the reference table. So again, we need to create table command. This will be our table name. Postgres is case sensitive by default. So, and one more thing, generally we are creating all kind of table and database related entities in small case only. So client ID, oh sorry, this is the client contact. Here we are having client ID, contact ID. So I will prefer to put contact ID first column because I am going to make it a primary key. And it is good to have the primary key on the as a very first column. So client ID, character varying, again 20. I'm not putting any not null or anything because I know it will be my primary key. Then client ID, try to match with the definition of your earlier table, character varying. Again, here we can put not null explicitly. Then what I need to contact name, phone number, email ID. Contact name, phone, and character, and email ID around 50 character. Then address, and then ejective, and that 3 column address. For the simplicity, I'm not splitting the address in line number 1, line number 2, city, state, pin code. Otherwise, we can do that also. Splitting the address in a multiple columns so that we can have some kind of MIS report also based on the city, based on the state and all. But for the simplicity, I'm not adding multiple column to store address things. And then this 3 column which we will have common in each database. After this, we need to add the primary key. I should copy this also. Client underscore contact key, or the primary key will be the contact ID. Now, I want to add one more constraint, that the client ID should be checked before inserting into the contact table with the client table, because if there is no client with that particular client ID, then there is no meaning to have a contact with that particular client ID. So we can add one more constraint name, like client underscore contact underscore foreign key here for
foreign key, just like primary key, this is the foreign key on the column client ID, and then references bracket. I'm missing something. Either it will be table name, or how it will understand that which column I want to refer. References this table and this ID. This is right, or I'm missing something? Constraint name, foreign key, column of the current table, references, table name, then in the bracket, column name of that reference table. It is right, or I'm missing something? Anybody can help me? This looks okay, sir. This looks okay, na? Let's try, otherwise Postgres itself bounce back. Eesh. Where is this problem? Character varying, spelling problem. Next, one more attempt, and it is successful. So in the same manner, we can add multiple foreign key also on different tables and on different columns. Okay, so I am putting this also as my list of history commands. Now, so we have seen one particular command so far, create table command, and in the create table command we have talked about adding the constraint, adding the primary key, adding the foreign key, columns, OVS, and table. Next is our insert command. So before going to insert command, we can see what is our record in the table. Obviously it will be 0, no record. So select is the most useful command and frequently used command, I would say. Select star. Star means get me all columns from table name client. Select star from client, and it is showing me one empty table along with the column definition. I have run this query so that I can get the list of column in front of me. Now there is another command, insert command. Insert into. Then we need to provide table name. Insert into client and then values. Typically we can provide list of columns here and then list of values here. So if I am not going to provide value for each and every column, then I have to provide the name of the column after the table name, so that, and this is the sequential manner. First column, first value will be mapped with the first column name I will define into the first bracket. So as of now, I am going to provide value for each and every column. Client ID, it is a new character, so I will put 1 in a single quotes. Name of the client, say PCS. Is active, I can put true. Is deleted, I can put false. And OP date, in the OP date I can put, there is a function current timestamp. Yes, 1, 2, 3, 4 and 5. How many columns we are having? 1, 2, 3, 4 and 5. If I am running this, I am getting the output as a inserted 1 record. Now if I am running the select query, select star from client, make sure
if you are having insert query in the query editor and you are writing select query, after that select it, then run. Otherwise that insert query will run again. So now you can see that I am having one record in my database. What happen if I am adding, I am trying to add one more record with the same ID, say Wipro, everything is same. I would like to run this query and it will not allow me to execute this query. What is error I am getting? Duplicate key violates unique constraint and name of the constraint. Detail is client ID 1 already exists. So this is the database management system responsibility. If I have mapped client ID or declared client ID as a primary key, then it will not allow me to store same value twice. Okay, so I have to change the ID of the record. If now I am running this query, it is successfully inserting. And if now I am selecting all the record from the client, now I am getting 2 records. Any problem till now? No problem. No, sir. Now what happen if I am not putting these 2 columns? Because I know there is a default value set for these 2 columns. Can I run this query? I think this will not work because I have not mentioned the list of column where this value should be mapped, and I have not provided adequate values. There is 5 columns in the table and I have provided only 3 values. So I need to know the column name. So I am running the select query as of now. Now I am saying the first value will be for the client ID, second value for the client name, and the third value for the OP underscore date. I have skipped is active and is deleted from the list of the columns in the insert query because I know I am only providing 3 records, 3 values. Now if I am running this query, 3 Wipro, no, 3 is HCL. OP date of relation client does not exist. What was the column name? OP. OP underscore OP, not OD. So here you can see that I have not provided all 5 column values. I have only provided 3 values, but I have mentioned the name of the 3 columns also, so that the first value will be placed in client ID, second value will be placed in the client name, and the third value will be placed in the last column, that is my 5th column in the database table, OP date. And rest of the value will be set from the default. You can see in SQL there is a true and false. Why it is true and false? Because in the table definition we have provided that if in the insert query you are not able to get the column values, set it as true for the is active and false for the is deleted. Okay. Now we are having 3 records in the client table. So now we are moving in client contact. Similarly, we can create insert query for client contact table also. Insert into client contact values 1 for the first client,
sorry, first one is the client id value, means primary key of the client id table. Then second one is for the reference value from the client table. Third is the client name, Rakesh Kumar. Phone number, email id, and then address. Suppose I am putting just test, and after address we are having is active, is related, OP date, means true, false, and current time stamp. So I'm making it in 2 lines so that you can read it. Now insert into client contact. First value for the primary key of the client contact table. Second value is the reference key, which is one belongs to the client table 1, that is TCS, and then rest of the other column values based on the definition of this table. What happen if I am running this query? It is inserting one record in the client contact. Now, what happen if I am writing 5 here? I know that in the client table, we are having only 3 records, 1 TCS, 2 Wipro, 3 HCL. There is no client who is having client ID as 5. So what happen if I am writing 5 in the place of client ID column in the client contact? It is saying, okay, sorry, it is the duplicate. I need to change the client ID also. Insert or update on the table client contact violates foreign key constraint. Constraint name is the client contact foreign key. Client ID 5 is not present in the table client. So this is the referential integrity. We cannot insert any record for the client ID column which does not exist in the parent table. Okay, so I have to put something like this. It is okay. Similarly, now we are moving to the next command, that is the delete command. So far we have created create table. We have inserted 3 record in the client table, inserted 2 record in the client contact table, and we have used select query to get the data from the tables. Now our next client command is delete. Delete from table name, and if I run this command, I will lost all 3 records. Is that will this happen or something else will happen? What happen if I am running this command, delete from client? Anybody can tell? How many records will be deleted or no record will be deleted? कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं होने का सर. कोई रिकॉर्ड नहीं डिलीट होने का. क्यों? सारे रिकॉर्ड. ये लो, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी. ये लो. बताइए. Where clause it should be. Where clause. ना इट शुड बी तो ठीक है. अभी अगर मैं चला दूं तो क्या होगा? तीनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, कोई नहीं होगा, 2 Yes, all. ऑल डिलीट हो जाएंगे. ऑल डिलीट हो जाएंगे. Yes. लेकिन फॉरेन की है ना सर, तो डिलीट कैसे होगा? वो पहले जो है तो चाइल्ड वाले कॉन्टेक्ट वाले को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा. हाँ, वेरी गुड. Yes, लेकिन अब reference एक की क्वेश्चन, even एक we should question ये भी- we cannot truncate as well without excluding foreign key. yes. So
बेसिकली कोई भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, क्योंकि पूरी सिंगल कमांड एक ही ट्रांजेक्शन में जाएगी और एक्सेप्शन होने पे सारा रोल बैक हो जाएगा। और एक्सेप्शन क्या आएगा कि हमारे क्लाइंट टेबल में एक रिकॉर्ड ऐसा है जो कि क्लाइंट कॉन्टेक्ट में भी है, इवन दो क्लाइंट आईडी 1 और क्लाइंट आईडी 2। अगर हम क्लाइंट कॉन्टेक्ट को देखें तो इसमें क्लाइंट आईडी 1 के लिए भी एक रिकॉर्ड मौजूद है और क्लाइंट आईडी 2 के लिए भी एक रिकॉर्ड मौजूद है। अगर मान लेते मैं इसको रन कर भी दूं तो क्या आया, अपडेट और डिलीट ऑन टेबल क्लाइंट वायलेट्स फॉरेन की कंस्ट्रेंट सेम कंस्ट्रेंट ऑन टेबल क्लाइंट कॉन्टेक्ट। लास्ट टाइम मैसेज जो था वो इसका उल्टा था कि आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे वो आईडी मौजूद नहीं है। अब ये है कि आप डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर ये आईडी मौजूद है। ठीक है, यही हमने लास्ट टाइम फ्राइडे को यही डिस्कस किया था कि चाइल्ड टेबल में वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा जो पेरेंट टेबल में अवेलेबल नहीं है, और पेरेंट टेबल से वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा जो जिसका रेफरेंस चाइल्ड टेबल में मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं क्लाइंट टेबल से क्लाइंट आईडी 3 को डिलीट कर दूं तो वो हो जाएगा। क्लाइंट आईडी 3 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीसीएस का कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एचसीएल का कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास क्लाइंट कॉन्टैक्ट टेबल में नहीं है। 1 का एक रिकॉर्ड है, 2 का एक रिकॉर्ड है, लेकिन 3 का तो कोई नहीं है। तो ये कमांड चल जाएगी, ठीक ठीक, एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को 2 करता हूं तो मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप चाइल्ड टेबल से पहले डिलीट करो, या 1 करता हूं तो भी आ जाएगा कि आप पहले चाइल्ड टेबल से डिलीट करो। ठीक है, एनी डाउट? इसका मतलब हो गया कि क्लाइंट को डिलीट करने से पहले मुझे डिलीट फ्रॉम क्लाइंट कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। पहले अगर मैं एक चला देता हूं क्वेरी तो क्लाइंट कॉन्टेक्ट से 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अब अगर मान लो तो मैं इसमें वेयर क्लॉज नहीं भी लगाता हूं और इसको चलाता हूं तो इससे भी 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ढेर सारे रिकॉर्ड डालने थे। चलिए इसमें एक थोड़ा सा वेयर कंडीशन देख लेते हैं फटाफट से। 1 HCL, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। टू 3 4 5 ECS, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। रन कर देते हैं। क्या हो गया, सेमीकोलन मिसिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेरी है हमारे पास, अपडेट। हमने अभी तक कौन कौन सी क्वेरी पढ़ी है, मैं जरा यहाँ लिख लेता हूँ। हमने एक क्रिएट करी है, हमने एक इंसर्ट करी है, हमने एक, ये कमेंट है यहाँ पे डबल हाइफन से हम यहाँ पे कमेंट लगाते हैं। हमने डिलीट क्वेरी भी देख ली और हमने सिलेक्ट क्वेरी भी देख ली। एक क्वेरी है अब हमारे पास और बची हुई है, अपडेट। तो अपडेट का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमारे को किसी रिकॉर्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर कॉलम की या कॉलम के सेट की वैल्यू बदलनी हो। तो उसका जो सिंटेक्स है वो है अपडेट, देन नेम ऑफ द टेबल लाइक क्लाइंट, देन सेट। सेट में हम पेयर्स बताते हैं। जैसे सपोज मैंने बोला इज डिलीटेड इक्वल टू ट्रू। सिमिलरली मैं यहाँ पे कॉमा देके दूसरा कोई कॉलम इक्वल टू दूसरी कोई वैल्यू, कॉमा तीसरा कोई कॉलम इक्वल टू तीसरी कोई वैल्यू का हम पेयर बढ़ाते चले जा सकते हैं। अपडेट, टेबल का नाम, सेट, कॉलम का नाम इक्वल टू उस कॉलम की नई वैल्यू जो आप डालना चाहते हैं।
अगर आपको सारे रिकॉर्ड में, सपोज मेरे डेटाबेस में एक पर्टिकुलर टेबल में 10,000 रिकॉर्ड है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत ही कम चांसेस है जहाँ पे मुझे हर रिकॉर्ड के किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को सेम वैल्यू से रिप्लेस करना हो। ऐसा कई बार होता है, जैसे सपोज हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, उसमें एक सैलरी कॉलम है, कंपनी का मैंडेट आता है 10% सबका बढ़ा दो, फिर तो बिना वेयर कंडीशन के सबका 10% बढ़ा दो। मैथमेटिकल कॉलम में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, देन न्यूमेरिक कॉलम में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। अपडेट क्लाइंट सेट कॉलम नेम इक्वल टू कॉलम वैल्यू वेयर सम कंडीशन, लाइक मैंने बोला क्लाइंट आईडी इक्वल टू से 1। यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाता है हाउ मेनी रोज अफेक्टेड, जैसे अपडेट 1 आया है तो इसका मतलब है एक रिकॉर्ड में अपडेट हुआ है। चेक करने के लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट। यहाँ पे देखिए एक नंबर रो पे इज रिलेटेड में ट्रू आ रहा है, बाकी सब में फॉल्स आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू हमारी अपडेट हुई है। ठीक है, इसी तरीके से और किसी कॉलम को और किसी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में अगर हमारे को चेंज करना होता है तो हम अपडेट टेबल अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपडेट टेबल का नाम, सेट पेयर ऑफ कॉलम्स एंड देयर वैल्यूज वेयर सम वेयर कंडीशन। ये जो वेयर कंडीशन है ये लॉजिकली ट्रू या फॉल्स में इवेल्युएट होती है। लाइक वेयर क्लाइंट आईडी इक्वल टू 1, तो पहले क्लाइंट का आईडी क्या था 1, 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू। दूसरे क्लाइंट का आईडी कितना था 2, 2 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, यानी कि उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करेगा। इस तरीके से सेम वेयर कंडीशन हम यहाँ भी लगा सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट वेयर क्लाइंट आईडी इक्वल टू 1। तो इसमें आपको फिल्टर रिकॉर्ड आ रहे हैं। सपोज क्लाइंट टेबल में अगर ज़्यादा रिकॉर्ड होते, 1,000 या 2,000 रिकॉर्ड होते, और हमारे को किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में 5 या 7 रिकॉर्ड चाहिए जो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हो, तो नॉर्मली क्या है कि क्लाइंट के पास इस पर्टिकुलर टेबल में हमारे पास एक्टिव कॉलम है, डिलीटेड कॉलम है। मान लेते हैं मुझे जानना है कि काउंट ऑफ द रिकॉर्ड्स, उसमें भी हम बात कर लेते हैं आगे। जैसे हमने सिलेक्ट स्टार किया था, मुझे स्टार नहीं सारे कॉलम नहीं जानने हैं, मुझे सिर्फ क्लाइंट का नाम जानना है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कॉलम के नाम को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सिलेक्ट नेम ऑफ द कॉलम्स और द लिस्ट ऑफ द कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर जो कंडीशन हमारे को लगानी है। अब इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ एक वैल्यू आएगी, दैट इज HCL। क्यों, हमने बोला 5 कॉलम में से हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए, दैट इज क्लाइंट नेम, और 3 रिकॉर्ड में से या 5 रिकॉर्ड में से हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए जिसका क्लाइंट आईडी 1 हो। तो इसका आउटपुट कितना आ रहा है, सिर्फ एक कॉलम और एक रो। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि भाई नहीं एक को छोड़ के सारे दिखा दो, तो हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन से इसको नोट कर सकते हैं। पोस्टग्रेस में आई थिंक डेटाबेस में किसी जगह से ये ग्रेटर देन लेस देन का भी इस्तेमाल होता है, इसका भी मतलब वही है नॉट इक्वल टू 1, और हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉट इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दिस। Select client name from client where client ID not in this list of values। अभी हमने इसमें एक ही डाला है तो हमारे को 4 रिकॉर्ड वापस आ जाएंगे। अगर मान लेते हैं मैं बोलता हूँ नहीं क्लाइंट आईडी 1 और क्लाइंट आईडी 5 को छोड़ के मुझे चाहिए, 5 तो है ही नहीं, मे बी 5 होगा, हाँ 5 होगा, टेक महिंद्रा नहीं आएगा। तो इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड नहीं आए, क्लाइंट आईडी 1 और क्लाइंट आईडी 5 नहीं आए। अगर मुझे इन्हीं 2 को चाहिए था तो मैं इस नोट को हटा देता, तो सिलेक्ट क्लाइंट नेम फ्रॉम क्लाइंट वेयर क्लाइंट आईडी इन, जो इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हो, तो वो कौन है, टेक महिंद्रा और HCL।
सिमिलरली हम और भी कॉलम पे क्वेरी कर सकते हैं, लाइक वेयर इज अंडरस्कोर डिलीटेड इक्वल टू ट्रू। एक ही रिकॉर्ड आएगा। सिलेक्ट क्लाइंट नेम फ्रॉम क्लाइंट वेयर क्या बोला, इज डिलीटेड इज डिलीटेड इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर सिलेक्ट और हमने सीखा अपडेट और हमने सीखा वेयर क्लॉज, सो दैट वी कैन वर्क ऑन फिल्टर्ड लिस्ट ऑफ रोज या फिल्टर्ड रिकॉर्ड के ऊपर हम काम कर सके। फिल्टर रिकॉर्ड के ऊपर काम करने के लिए हमारे को कब जरूरत पड़ती है, जब हमें रिकॉर्ड डिलीट करने हो, सिलेक्ट करने हो, अपडेट करने हो, तब हम वेयर कंडीशन लगा सकते हैं। और हमने ये भी बोला कि हम कॉलम की लिस्ट स्पेसिफाई करेंगे, सिलेक्टेड कॉलम को भी देख सकते हैं, सिलेक्टेड कॉलम को भी देख सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग कॉलम नेम in place of star by specifying column name in place of star। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मैं पहले से ही कुछ रिकॉर्ड्स एक अच्छे खासे काउंट में, सपोज 15-20 रिकॉर्ड क्लाइंट टेबल में और 30-40 रिकॉर्ड क्लाइंट कॉन्टेक्ट टेबल में पहले से ही रखेंगे। डिफरेंट कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन को मिला के एज रिलेटेड, एज एक्टिव और कुछ डेट्स, ओपी डेट के अंदर कुछ वैल्यूज को हम अपडेट करके रखेंगे, ताकि हम ग्रुप बाय और ज्वाइंस, इन दो जो हमारे बच गए हैं अभी, ज्वाइंस के ऊपर काम करना सीख लेंगे और ग्रुप बाय के ऊपर काम करना सीख लेंगे। तो हमारा जो बेसिक एसक्यूएल है, जिसके थ्रू हम टेबल के अंदर डेटाबेस के अंदर टेबल को बनाना, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, अपडेट करना, डिलीट करना और क्वेरी करना, सिलेक्ट करना, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, एनी क्वेरी फॉर दिस सेशन? आशी, कुछ समझ में आया? किसी को कुछ समझ में आया? Sir, one question. हाँ, यस। So when you create like these primary keys and also, does it also create indexes automatically in Postgres? सॉरी, आई कुड नॉट गेट योर क्वेश्चन। जब इंडेक्स वो कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं प्राइमरी की, हाँ तो उससे बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्रिएट होता है क्या? हाँ, प्राइमरी की जब हम डिफाइन करते हैं और यूनिक की जब डिफाइन करते हैं तो एक इंडेक्स डिफाइन क्रिएट होता है। इंडेक्स का हम इंडेक्स वाला जब टॉपिक कवर करेंगे कि इंडेक्सिंग क्यों जरूरत है, कस्टम इंडेक्स कैसे बनाए जा सकते हैं, री इंडेक्सिंग करनी कब जरूरत पड़ जाती है, वो सब टॉपिक थोड़ा एडवांस है। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पोस्टग्रेस इंस्टॉल किया है। एक बार आप ये इंडेक्सेस को एक्सपेंड करोगे क्या? आई मीन मेरे को पोस्ट से बहुत टाइम हो गया तो। नहीं, यहाँ पर तो यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस आएंगे ना। अच्छा, डिफॉल्ट इंडेक्स तो जो सिस्टम डिफाइंड इंडेक्सेस है वो यहाँ नहीं आएंगे। मतलब ये एक्चुअली बनते हैं या ये मैनुअली क्रिएट करने पड़ते हैं इसमें? नहीं, बनते हैं। जैसे आपने प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट कॉलम लेवल पे प्राइमरी की अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया, हाँ, उसमें भी एक कंस्ट्रेंट बनता है। हाँ, कंस्ट्रेंट बनता है पर इंडेक्स बनता है। एक सेकंड, कंस्ट्रेंट बनता है, लेकिन आई थिंक वो कंस्ट्रेंट के लिस्ट में दिखाई नहीं पड़ेगा। और जब हमने स्पेसिफाई किया है कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट के लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है। तो सिमिलरली इंडेक्स भी जब हम क्रिएट इंडेक्स टेबल कमांड से बनाएंगे तो यहाँ दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो डिफॉल्ट इंडेक्सेस हैं, जो कि प्राइमरी की कॉलम पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम का काम है बनाना, तो वो यहाँ पे यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस ही लिस्ट में आते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, एनीवन एल्स?
Have any doubt, any question? No doubt. Okay, do one more thing till the when we will come back for the next session. You create all the table structures as I have demonstrated you in this session, and take the reference from our website, course website, project work. Thank you for the joining. Thank you very much. Thank you, sir. Thank Okay, you. thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.